Hey guys, good morning and welcome to my Sunday vlog. तो आज फरवरी 4 है एंड संडे छुट्टी का दिन और आज का दिन है जब मेरे को टाइम मिलता है कुछ लॉन्ग व्लॉग्स बनने के लिए। आज मेरा एक फ्रेंड का शादी है, बाइक को सर्विस पे देना है एंड थोड़ा जिम भी करना है, तो वो सब मैं इस व्लॉग पे कवर करूँगा। So if you are gonna like this vlog, so please do hit that subscribe button and also like and share this video. So hi guys, so मैं नीचे आ चुका हूँ एंड ये है मेरा गाड़ी, इसका सर्विस होना है। गाड़ी का डर्ट गिट थोड़ा काफ़ी लग चुका है एज यू कैन सी हियर, और ये सस्पेंशन कवर के ऊपर बहुत ही गंदा हो गया है। ऑफ रोडिंग नहीं गया तो बेंगलुरु रोड्स का हाल ये है। एक रोड है वे टू माई वर्क, बहुत ही ख़राब रोड है, पूरा गाड़ी गंदा हो गया उसके मामले में। तो आज जनवरी 9 से फरवरी 4 है आज। सो इस बीच में मैं गाड़ी को अराउंड 550 किलोमीटर चला चुका हूँ एंड आज इसका फर्स्ट सर्विस का भी डेडलाइन है। तो मैं आज गाड़ी को सर्विस के लिए छोड़ रहा हूँ। आई डू नॉट हैव एनी मेजर प्रॉब्लम्स गाड़ी में, बट वो थोड़ा गेयर डालने में साउंड आता है। मेरा एक फ्रेंड वो इंटरसेप्टर चलाता है, उसको मैं पूछा एंड वो बोला कि ये बहुत ही कॉमन है। एंड दूसरा है कभी कभी ABS आई फील इट गेट्स ऑन ऑटोमेटिकली। आई डोंट नो हाउ इट इज़ हैपनिंग। जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ वो छोड़ छोड़ के ब्रेकिंग इट इज़ फीलिंग। सो ABS इज किकिंग ऑन समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम, लाइक 98% ऑफ द टाइम वो नहीं होता है, जस्ट 2% इधर उधर। एंड आई फील लाइक गेट रियली कन्फ्यूज उस टाइम। तो वो दोनों प्रॉब्लम है जो सॉल्व, नॉट दैट बिग प्रॉब्लम बट आई थिंक दे माइट डू समथिंग आउट। सो ये है आज का काम। इसके बाद मेरा फ्रेंड का वेडिंग भी जाना है, इट्स अराउंड 10:30-11। तो देखिए आज का सफ़र कैसा चलता है। So guys, I think the best part of my day is when I'm riding this bike. So what a beautiful bike this is. Thoda zindagi mein the vibes have increased after I've taken this beast. बहुत ही अच्छा गाड़ी है। So this is the exhaust. Just at that 4,000 RPM you can hear the engine rev. So आज फर्स्ट सर्विस होने के बाद I can take it beyond 7,000 RPM. So देखेंगे कि इंजन का रेस्पॉन्स कैसा बढ़ेगा। Having problem with this helmet, that mobile adjusting thing. मैंने GoPro लेना चाहिए बट अभी तक व्यूज उतना नहीं आ रहा है, then why to simply invest money on the GoPro? So आप लोगों का if the view gets better, I would definitely buy a GoPro and start my motor vlogs even more sophisticatedly. एंड हर टाइम मोबाइल डालने में एंड रिकॉर्ड करने में तकलीफ होता है, बट व्हाट टू डू, दिस इज व्हाट आई हैव टू डील विद राइट नाउ। सो शोरूम ने बोला था कि 8:30 द शोरूम विल गेट ओपन एंड सर्विस के लिए आई कैन लीव अ बाइक। मैंने कॉल किया बट नोबडी पिक। पता नहीं कि क्या हाल है उधर, कोई है कोई नहीं है, बट मेरे को गाड़ी को छोड़ के आई हैव टू अगेन गो टू माई फ्रेंड्स वेडिंग 11 या 12 o'clock। उसके बाद भी थोड़ा काम है, देख लेंगे कैसा आज दिन गुजरता है। रॉयल एनफील्ड 452 इज़ लाइक ए एडवेंचर का भी फील देगा और एक स्ट्रीट फाइटर का भी फील देता है। एंड इट इज़ अ वेरी फैबुलस मशीन टिल नाउ। I literally have no problems or no complaints. लोग बोलता है पुराना हिमालयन अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, बट लेकिन मेरे लिए I think this is the best bike that I have been with after my CBR 150.
इस बाइक्स ना लोग काफ़ी कमेंट करता है वैसा है ऐसा है, बट when they feel the bike, I think they will be astonished. काफ़ी बढ़िया बाइक है and literally one of the best creations of Royal Enfield, I could say. Oh, the camera position, I don't think it is adjusting that well. इस वीडियो में थोड़ा वो ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है, तो आई जस्ट आस्क यू गाइस टू वर्क इट. आई थिंक मोबाइल पे व्लॉगिंग हाल तक ओके है, बट उसके बाद आई थिंक यू हैव टू हैव दैट GoPro here. The size, the compatibility, the way to use, the ease of the use is a lot better in the GoPro. Definitely I have to get that very soon. और मेरा vlogs करने में it is getting difficult. I don't know ये YouTube का क्या हाल है. It doesn't push any good videos. Maybe वो saturated हो गया है, the contents, or I don't know, whatever it is. So I definitely request you guys to please help push the video by sharing it with your friends, or थोड़ा comments भी डाल देना. This bike goes well in the lower speeds also and in the higher speeds also. I don't feel that kuch kicks, that's what the piston kicking in between when you're in the lower speeds, but काफी comfortable machine hai. You can see cities mein I think the maximum that I can go is 4th gear, having no problem controlling, ease of moving. Very smooth engine, doesn't vibrate much in the lower gears, but thoda vibration hai once you cross 80 kilometers per hour. I haven't gone up like 100 or 110, but 80 में भी थोड़ा vibration लगा मेरे को. But on the lower gears in the city, a lovely bike to ride. The showroom उतना दूर नहीं है. I think just 4 kilometers from my home, and इधर से another 1.5 kilometer. I hope कि वो लोग ओपन रखा है. It is almost around 9-10, वरना तो उधर ही वेट करना पड़ेगा. So ये है बेंगलुरु का हाल. हर तरफ कंस्ट्रक्शन, metro works, वो work, they work, traffic. I think the guys who are staying outside Bangalore बहुत ही lucky लोग हैं यार. आप लोग उतना traffic को you don't have to deal. Bangalore एक काफ़ी green city था, very अच्छा city था जब मैं छोटा था. 2005-2000 में a very lovely city. Wherever you go there was greenery, not that much crowd, antique buildings, but times have changed. हर जगह गाड़ी, हर जगह भीड़ लोग. One of the most crowded cities in the world. We never expected that to happen, but हो गया. अब क्या करेंगे. So इधर मेरे को राइट लेना है, and the showroom is right over there, but हमें यू टर्न लेना पड़ेगा या नहीं देखना चाहिए. सुबह का टाइम है एंड उतना ट्रैफिक भी नहीं होगा. लेट मी सी. आई थिंक आई कैन टेक अ लेफ्ट, नो हार्म इन दैट. So ये है रॉयल एनफील्ड का शोरूम.
guys, so this is what happened. मैंने शोरूम तक गया और उसके बाद देर आर अराउंड 150-200 गाड़ीज उधर सर्विस कराने के लिए एंड वो आदमी ने बोला कि गाड़ी मैंने अब छोड़ा तो आई विल गेट द बाइक मंडे या ट्यूसडे डेफिनेटली ट्यूसडे मिलेगा उन्होंने बोला बट आई थिंक उतना लंबा समय नया बाइक को उन लोगों का हाथ में देना इट इज़ वेरी बैड सो इसलिए मैं सोचा कि मैं गाड़ी वापस घर पे ले आऊँ और या फ्राइडे या थर्सडे को आई थिंक आई विल लीव द व्हीकल फॉर द फर्स्ट सर्विस सो ये था स्मॉल व्लॉग इंटरप्ट हो गया थोड़ा बीच में आई होप यू गाइस विल forget and also hit that subscribe button and also like and share this video see you